children, today we are going to start with chapter number 8, Article 370 and 335A. So, Indian government, what it did, it abolishes decades-old laws that give measure to autonomy to a disputed Muslim majority region. So, Bharat has scrapped a law that grants special status to Indian administered Kashmir admin and indefinite lockdown and massive troops deployment. So, Minister of Home Affairs, that is Amit Shah, a close ally of Prime Minister Narendra Modi, told Parliament on Monday, 5 August 2019, that President had signed a decree, and what he is doing is abolishing Article 370 and 35A, right, which is stripping the significant autonomy of Kashmir and enjoyed for severe day. Now, what is Article 35A? So Article 35A is a part of Article 370. 35A was added to the Constitution after the order of President. जब प्रेसिडेंट ऑर्डर आया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, तो उससे हमने क्या था, आर्टिकल 355 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया था थ्रू एन अमेंडमेंट. Right? Article 355 of Indian Constitution was the article that empowered Jammu and Kashmir State legislature to define what? Permanent residents. So, those permanent residents, it was added to the constitution through presidential order when it was issued on 14th May 1954 under Article 370, which was part of 21 of the constitution. So how did it come about? So Article 35A was incorporated into constitution in 1954 by an order of the President Rajendra Prasad on the advice of Jawaharlal Nehru cabinet. Right? किसके एडवाइस से? जवाहरलाल नेहरू के. And the constitution order of 1954 followed that. In 1952 Delhi agreement entered into between Nehru and then Prime Minister of JLA. Sheikh Abdullah, which is extended Indian citizenship to the state subject. Text of Article 35 is 35A, saying of laws with respect to permanent residents and their rights. So we can say that defining a class of person. अगर आपको डिफाइन करना है क्लास ऑफ पर्सन, तो परमानेंट रेजिडेंट होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का एंड इम्पोजिंग अपॉन अदर पर्सन. एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेटलमेंट ऑफ द स्टेट एंड राइट टू स्कॉलरशिप and inconsistent would take away wages and rights are conferred to the other side. The article referred to as permanent residence law also bear female resident of Jammu and Kashmir from property rights in the event of marry a person from outside the state. अगर उन्होंने किसी outside state वाले person से क्या करिए, शादी करी. Why Article 35A was challenged? कि उसको challenge करा था और उसको क्यों ही abolish कर दिया गया? Because two valid ground है. According to Article 368 of Indian Constitution, amending power जो है Constitution की, वो किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में है. President has no power. प्रेसिडेंट के पास पहली बात तो कोई पावर ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, एंड ही डज नॉट हैव एनी पावर टू इनकॉर्पोरेट न्यू आर्टिकल. बट आर्टिकल 35A हैज बीन इंसर्टेड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, सो इट हैज इंसेप्शन इटसेल्फ इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल. प्रेसिडेंट के हाथ में कोई पावर ही नहीं है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 35A इज अबॉलिश्ड फॉर इट्स जेंडर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, विच इज अगेंस्ट आर्टिकल 40. वो जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कास्ट, क्रीड, कलर, उनका रिलीजन. सो आर्टिकल 35A of the Indian Constitution, Section 6 of Jammu and Kashmir, both are being challenged for being gender discrimination and violative of फंडामेंटल. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है. राइट? सो ऑर्डर ऑन द आर्टिकल 35A in 2019.